আর তারপরে ইয়েটা আর একটা এক্সট্রা ক্লাস দেবো, সেটা আমি হোয়াটসঅ্যাপে জানাবো। হ্যাঁ, ওটা একটু আরো সোজা লেভেলের পড়াবো, লজিক্যাল রিজনিং। আর একটু সোজা তোমার দেখে আমি বুঝে গেছি, তুমি লিখছিলে না, আমি বুঝে গেছি একটু বেসিক থেকে করতে হবে। ঠিক আছে, ইকো ক্লাসটা এসো, কি বলবো। ওই তো বলছি 4টে বৃহস্পতি। Okay, let's get started today and so we have been doing hypothesis testing on this session. So let's get started with this. Sir, আমার তো আগের গুলো কি হলো স্যার? না, আগে কারোরই করেনি, হাইপোথিসিসটা দিয়ে শুরু করি, তারপর আবার ইয়েতে যাব। তো হাইপোথিসিস পিডিএফ আছে, ওগুলো তো আমি কিছু পড়িনি। দরকার নেই, তুমি হাইপোথিসিস যেটা আমি ক্লাসে করাচ্ছি শুধু সেটুকু মনে করো। পিডিএফ পিডিএফ হচ্ছে আচ্ছা, ওই পরে কথা বলছি, সবাই রয়েছে। Okay, so hypothesis testing we are going to start now. Everyone can see the board. Okay. So where we got started in the last class, we started with what is hypothesis, and we also did type 1 error. We did type 2 error. We did power of a test. We did usefulness of a test. We also did applicability principles. So these are the things mostly we have discussed. So today I'll go a little bit advanced version of it in the hypothesis testing. Okay. So null hypothesis means, what is the null hypothesis? That's a basic presumption. So if I say that I'm presuming that in a book there are 100 pages and there are only maximum 3 mistakes per page, or 1 mistake per page. So that's a null hypothesis, that's called H0. Anything more than that, I reject the book, no. So we have to go for a normal principle way. So why we have invented statistics? So that is, if it is applicable for 1 or 2 cases, now will it be applicable for the entire thing? Whether we accept it or reject it, that decision becomes easier. So in short, we can say on the basis of a small data, please note it down, on the basis of a small data, how any large decision, or a large data based decision is being taken. on the basis of a small data. How any large data based decision is taken. So this is a basic structure which we have in hypothesis testing. We may have errors, right? Why we have errors in a statistical analysis? Remember that today's class will go till 8:30 sharp. Okay, so today will be an extended version. So on the basis of what we take a decision, and then we try to cross check whether the decision is right or not, and that is also being clubbed with a thing called whether this decision can be extended to any level or not. Okay. For example, let's start with a very interesting example. So this is a boy, and this is maybe a girl.
Now, when they meet for the first time, they are very much attracted to each other, which is the null hypothesis that they will be trying to accept each other. The boy likes the girl likes the boy. Things are cool, they are together. Okay. They meet for the first time, they meet for the second time, they meet for the third time. Things are going good with inside them, and they are maybe developing a good relationship as well. Now, certainly, after n number of meets, the girl on the n plus 1th meet says that she will not be available for the n plus 1th meet. Same thing happens for the n plus 2th meet. Same thing happens for the n plus 3th meet. Same thing happens for the n plus 4th meet. Okay, the boy is being rejected by the girl 4 times. अब आप लोगों का लिए सवाल जो है, what do you think? What the boy is thinking? That the girl is interested in someone else? Option A. Option B, the girl may not be, or the girl may not be interested in the boy, but may not be interested in the other one also. C, the girl maybe has fallen in love with another person. Okay. And the D is maybe the girl's past boyfriend or anything can keep on haunting. So all these assumptions are for the boys, but the boy cannot ask the girl because she's giving valid logic every time. So now, after how many times of rejection, the boy start believing that the relationship has gone in vain. He should be going in his own path. He should stop texting that girl. For example, if he takes 20 or 25 texts, the girl sends an emoji like this. Well, I'm sorry, I didn't manage to meet you. I'm very sorry. Okay. And remember that if you are a girl, you may think that this as a boy. Okay. So it's not a boy girl, so it's not a gender-based thing. So I'm just as me being a male, I'm giving a female's example. You can take a female. If you're female, you can take a male example. So can anyone tell me after how many rejections? और मान लो n plus 5 में वो मिल लेती है. नहीं n plus 6 से फिर से रिजेक्शन, n plus 7 से फिर से रिजेक्शन. रात के फोन कॉल करना, वीडियो कॉल करने में भी यही प्रॉब्लम. दिन के वक्त they call. So there is almost no communication is happening, and the girl may got a new job in the middle. Okay, and she's giving her logic. Him or the boy got a job and he's giving him logic. So can you tell me, after how many times of being rejected, they will decide to go apart? At least the person who is being rejected will go apart. Let's see whether you have any numbers for me or not. Why not? For example, you don't have to say don't have to give a statistical answer. This is not a statistically proven answer I want from you guys. I just want an answer. What do you think? 2 to 3 days. 2 to 3 days. Okay. Anyone else want to give it a try? Yes. Tell me, Paromita. No, sir. By mistake. I'm sorry? We can't say. I raised my hand by mistake, sir. Okay. So anyone else want to give it a try? So let's be realistic. Okay. As no one is helping me out, so let me give you an example. If you say me, if this happens to be me around 5 years back or 7 years back when I was only doing my PhD, so that time it was still cool because at the entire day's timing I was free, I can text her. But right now, every minute counts for me. Okay, if I text to that girl, if I text her whether he sees or not, so that is a wastage of time, right? So I can't waste my time into that thing because at that time I can make some shorts, I can make some things, and I can make some good videos, or rather say I can make some scheduling, I can talk to people, I can make some money in that. I can make some videos in that. So anything, monetarily, psychologically, advanced way, I have. So if it is a preoccupied structure to the boy or a girl, so this comes down to maybe 1 or 2 meetings. Yes or no? So then n plus r is r equal to 0, 1, sorry. R is less than equal to 2. Now, if the person really loves, this may get an extended version to r less than equal to 3. But this may extend it to 6 or 7
if the person does have this girlfriendless or boyfriendless situation over 3-4 years. So he thinks that, okay, finally I got someone, so let's hinge on to that, isn't it? But after maybe 6th or 7th, even when he's understanding that nothing going to be changed, so then he finally shifts from H0 to H1, isn't it? So when he is sure, and when the girl is sure that the person will not turn back, then they go. They can't wait for each other for a lifetime. So the shifting from alternative to hypothesis, from the null hypothesis, is a matter of fact given on the basis of some data in the system. अगर सिस्टम आपको ये डेटा देता है कि लड़की बहुत अच्छी है, सिर्फ टेंस्ड है और थोड़ी दिनों में वापस आ जाएगी, या फिर लड़का बहुत अच्छा है, थोड़ा सा काम में बिजी है, वापस आ जाएगा, so the girl could have waited or the boy could have waited maybe for n r equal to 15, 20, 30. But when the person is having a lot of other theories around and or not having full information about the girl or the boy, so then it drastically falls to 3 to 4 to 5. Even after that, will there be a direct breakup? No, I don't want to meet you and all, because their roles are rich and sophisticated people. They won't do the breakup like that. So here we talk about statistical data. So statistical data is not about some roadside chaiwala type thing. So here, if we think about the null hypothesis is not acceptable, we directly shift to H1 and we don't say that the null hypothesis was wrong. अगर कोई बोलता है 100 में से मेरा सिर्फ एक ही गलती है, तो आप जाके उसको मारते नहीं है, आप सिर्फ बोलते हैं your null hypothesis or presumption is wrong. It is more than that, and we have checked it around 300 pages. हर एक में ही ऐसा. So your presumption is wrong. Please change it. Okay. So that's why we call this power of a test. That is 1 minus type 2 error. So what is this type 2 error? So can anyone tell me whether this boy has committed a type 1 error or a type 2 error? Let's make it a little bit more interesting. Type 1 error, type 2 error अगर आप लोग थोड़ा बहुत भूल चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है. I am going to tell you now. Here. Type 2 error, sir. Type 2 error. Who have given the answer? What's your name? Srishti. Srishti. Did you have done the previous class? Yes, sir. Okay. So let's see this. Accept, reject, correct, and wrong, isn't it? This correct value is accepted, no error. Correct value is rejected, that's type 1 error. Wrong value is accepted, that's a type 2 error, and there's no error in this case. Okay. We don't know that whether someone else have approached the boy or not, and he have rejected that girl, isn't it? ऐसा तो हम लोगों के पास कोई information नहीं. But obviously he have accepted a wrong girl. ये तो भाई. तो इससे क्या पता चल रहा है कि type 2 error हुआ है. This does not guarantee कि type 1 error है ही. Isn't it? ठीक है, पता नहीं किताबों में इतना boring example क्यों रहता है. So this is the kind of a thing. Anyone having problem in understanding, you can tell me कि type 1 type 2 error एक साथ भी हो सकता है, लेकिन एक ही लड़की के लिए नहीं हो सकता. If the boy, let the boy's name is S, okay, and the girl's name is G. So S has chosen this girl G, but the girl turns out to be a time waster for that. बात नहीं करती है, जवाब नहीं देती है, कुछ नहीं करती है. What is this, man? Okay, so this is a type 2 error. A wrong value has been accepted. But maybe there is maybe N approached him before and he thought that you will get someone better. And obviously G is maybe look wise better than N, maybe height was better than N, maybe figure wise better than N, but this psychological pressure she was not creating. And after a certain point of time, if we characteristically, this is supposed to be a better option to him, because anyway he's leaving G and anyway G is not coming to S. So there is no point of choosing this null hypothesis. So you can't choose an impossible null hypothesis to prove your postulate. Getting the logic? So we can't choose
an impossible hypothesis or impractical hypothesis. Now, why it's a bigger problem? Now, G is a good-looking girl, so it's very hard to leave her, right? And the data is a precious data, so it's not like the entire world is filled up with unique-looking, very good-looking girls all together. The world is filled up with ugly girls. The world is filled up with ugly boys. So if you choose someone with respect to looks, and remember that, please take it as a statistics thing. Okay, don't take it as any other way. So here we choose our partner on the basis of the looks most. Okay. So here only one criteria we have given it to you, whether it is a good look or not. There are other criteria. Person is funny, good characteristics, good background, or a legal, what do we say? All the possible characteristics. Okay. So loyal or not. So here, this is the fact. Clear? So now, can this S with G combination, it's a type 1 error, maybe a type 2 error. लेकिन type 1 error होने के लिए देखो n को भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है. So n is another identity. उसके हिसाब से ये type 1 error किया हमारे S ने. लेकिन G के हिसाब से इसने type 2 error किया. क्या आप लोग ये बोल सकते हैं G के हिसाब से type 1 error भी हुआ है, type 2 error भी हुआ है? हाँ, हो सकता है G के लिए. Then we have to introduce another boy, maybe D into the system. Okay. तो S के हिसाब से G का जो combination है, that may be a type 2 error. But G के हिसाब से D का जो combination है, that may be a type 1 error. कैसे हो सकता है? Maybe D is another boy. Okay. And D has a perfect kind of a thing with which G could have been a perfect match. But G rejected D. Exactly the way S rejected N. Okay. So even G can commit a type 1 error, but with a different person. S can commit a different type 1 error, but with a different person. So if we are introducing any type 1 or type 2 error into the system, we need to introduce that extra people as well. So for the same people, we cannot do. लेकिन एक इंसान का type 1 type 2 error कर सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन दो अलग-अलग इंसान के साथ करें. Okay. So it is possible that S को मैं बोलता तुमने type 1 error किया, बोलता हाँ किया. क्या तुमने type 2 error किया? बोलता हाँ किया. S ने type 1 error किया N के साथ, and S ने type 2 error किया G के साथ. Clear? Both are error. What is the result? Null hypothesis is rejected. What was the null hypothesis? For example, S wants to live happy. Is he happy now? He has already lost N, and G उसको पत्ता नहीं देता. So what he will do? He is alone, he is unhappy. So the alternative hypothesis wins that S is not happy. Okay. So here ultimately क्या था? आपको कुछ किताबें बेचना है, तो आपने बोला 100 में से 100 पेजेस में सिर्फ एक गलती मिलेगा, लेकिन वो हो गया 100 में से 100 गलतियां, तो आप क्या हुआ? किताब नहीं बेच पाए. Okay. So no one wants to go for the alternative hypothesis. Okay. Till now clear that the type 1, type 2 error cannot happen to a single value at the single point of time in a discrete case, but obviously for a single value but associated with the other value, that can happen together. अब damaging कौन सा है बोलो तो? S और N या फिर S और G? S किसके लिए ज्यादा दुखी है? N को छोड़ दिया या फिर G के साथ रहा? G के साथ नहीं रहा, उसको नहीं पता नहीं रहा. क्या लगता है सबसे डैमेजिंग कौन सा है? हाँ? What? Leaving N. Leaving N is a much more damaging. Okay? तो तुम्हें लगता है leaving N is a much more damaging. So type 1 error is a damaging one. Okay. अच्छा, ऐसा कोई गारंटी है कि N के साथ रहने पर N भी थोड़ी बहुत दिनों के बाद G की तरह बिहेव नहीं करता? कर ही सकता है. Yes or no? Guys, now this is interesting. Everyone should participate into this. They can, right? N can transform into G after a certain point of time. Who knows? Yes, sir. So here, if someone wrong gets into your system, that is much more damaging than leaving somewhat of value could have done something better. Because that is also basis of the presumption.
n के साथ में अच्छा जिंदगी बिता पाता, दिस इज अ प्रिजम्पशन, नॉट अ प्रूवन ट्रूथ, बट जी ने मेरा जिंदगी खत्म कर दिया, इट्स अ प्रूवन ट्रूथ बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड। क्लियर? Yes, sir. So S choosing G is much more damaging than S not choosing it because we cannot prove it. देखो नॉर्मली रियल लाइफ में कौन क्या सोचता है अच्छा अलग है, स्टैटिस्टिक्स में प्रूव क्या किया जाए, we don't have data on that n's characteristic, we only saw अच्छा n के साथ ऐसा है, सिर्फ n दिखने में उतनी अच्छी नहीं थी इसीलिए g ने इसके पास s g के पास किया। So type 2 error, you can write it in your copies, type 2 error is much more damaging than type 1 error। सच में भी सोचिए ना, रॉन्ग डेटा आपने ले लिया, रॉन्ग डेटा सिस्टम में आने से क्या प्रॉब्लम होता है पता है, आपको उस डेटा से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, यू कांट लेट इट, यू इफ यू हैव अ डेटा इन अ सिस्टम यू हैव टू डू इट। जैसे मान लो कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर में अगर कुछ रख दिया ना, आइदर वो वायरस की तरह काम करेगा या फिर कुछ 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 का काम करना ही, कंप्यूटर कांट लीव इट। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एस और जी का एग्जांपल थोड़ा अगर पुराना लग रहा है तो मान लेते हैं देयर इज अनदर टू फ्रेंड्स, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2, ठीक है, दोनों को गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन F1 या F2 में दोनों के पास ही दो गाड़ियां हैं, लेकिन अभी F2 F1 के घर में आए घूमने के। तो ये पहला जो दोस्त है ये बोलता है चल घूमने चलेगा, आज इधर उधर चलते हैं, ठीक है, मान लेते ये बॉय गर्ल का ही रिश्ता नहीं है, गर्ल गर्ल हो सकता है, बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल भी हो सकता है। तो F1 ने तुरंत बिना सोचे हाँ बोल दिया और अपने ड्राइवर को बुला लिया, ठीक है, लेकिन उन लोगों को मिलने जाना था उसके फ्रेंड 3 को, F3, लेकिन वो लोग जल्दबाजी में ये भूलना ही पूछना ही भूल गया कि F3 तो अपने घर में है या नहीं, वो अवेलेबल है या नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, तो उन्होंने F3 को फोन किया और F3 उठा नहीं रहा है। अब F1 F2 क्या करे, ड्राइवर तो आ चुका है, ड्राइवर आ चुका मतलब ड्राइवर पैसा लेके जाएगा, ड्राइवर अगर 4 घंटा बैठेगा उसका 6 घंटे का 400 रुपए है, ही हैव टू पे। तो F3 के बारे में कुछ नहीं पता, तो ऑप्शन 1 क्या है, F3 के पास चले जाओ, वापस आना पड़ सकता है, पूरा मूड जाएगा। ऑप्शन 2 क्या है, ड्राइवर को बोलो तुम वापस जाओ, तुमको पैसा नहीं देंगे, तो ये ड्राइवर खोना पड़ेगा, जिंदगी भर ये ड्राइवर नहीं है। तीसरा हो सकता है they can request that driver to go and give them some money, and fourth is okay, as the driver has come we won't be requesting or we won't be rude, let's go out somewhere and do something, which is the best decision, very hard to say, क्या करेंगे वो नहीं है, स्टैटिस्टिकली चारों का ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव, but the worst decision has to be the fourth. Why? Because now in order to save or in order to utilize the money which this driver has given them, now they are going for a higher expenditure, aren't they? अब ड्राइवर आया है तो घर से निकलेगा तो मैं रेस्टोरेंट में जाएगा, उसका खर्चा है, तेल में तेल जलेगा गाड़ी का, ठीक है, तो F3 के घर में जाए ना जाए उन लोगों का खर्चा तो हो ही रहा। So if they would have paid that driver easily, so that is statistically much more better option. Obviously तुम कहोगे सब तो सर F3 से पूछ के बुलाना चाहिए, तो that is the thing. Hypothesis testing तो यही है कि आपको नहीं पता आप क्या किए हैं, but you have got into something. You have to decide because you don't have the time, you don't have the data. है ना? Clear हुआ सबके सामने? So obviously fourth decision is worst decision with respect to statistical analytical framework. So hypothesis ये कहता है कि भाई ड्राइवर को बुला लिया कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं उसको यूटिलाइज करने के लिए जाओ, let the driver go, pay enough, you can choose from second and third, you can negotiate with the driver or you may not negotiate with the driver. And what was the first option? Let's take the risk. So first and fourth are obviously very similar to each other, isn't it? So second and third are very okayish decision, but again losing a driver on the basis of the day one is a very bad decision again. So obviously 3 is the most plausible decision over here. Okay, let's negotiate. हम लोग बोले थे तुम लोगों तुम आए हो, तुम कितना लोगे बोलो, वो बोलेगा ठीक है मैं तो सोचा था पूरा शाम का, आप पूरा ही दीजिए, अगर वो पूरा मांगता है तो पूरा देना पड़ेगा, अगर वो नेगोशिएट करता है तो उसे करना पड़ेगा, isn't it?
सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ऐसे बहुत सारे टाइप 1 टाइप 2 की चीजों में आएंगे जिसमें आपको डिसीजन खुद से लेना है. ओके, कौन सा टेस्ट होगा? जैसे मान लो बहुत आसान है, n लेस देन 30 टी टेस्ट, n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 z टेस्ट. ये तो मैं आपको रूल बता दूं, लेकिन टी टेस्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो आपको समझना होगा. ओके, so which test I can tell you, how to test that also I can tell you, but in which circumstances which test to apply and how to test it, that you need to decide. ठीक है, कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं, तो ये भूलने का बीमारी से बचना पड़ेगा. हम लोग कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं. Let me see whether you have any questions for me or not. Okay. Okay, I got a good question. Okay, let me just go to that example of boy and girl. Okay. Nathan got a very interesting look on the boy-girl scenario. कि सर अगर 3 मीटिंग या 4 मीटिंग के बाद जब लड़का सोच रहा है कि लड़की को छोड़ देगा, इसके साथ नहीं रहेगा, what happens? The girl realizes and she comes back and she becomes a very good girlfriend now. Or the boy realizes and becomes a very good boyfriend now. Then what? So how can you say it with respect to the full question is, तो ये statistical hypothesis में किस तरीके से represent करेंगे? आमतौर पे कॉलेज का क्लास होता तो मैं इसको बोल देता इस तरीके का जरूरत नहीं है, you don't need to be so complicated. लेकिन कॉम्पिटिटिव क्लास में इस तरीके का इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आ सकते. ओके, तो इसको हाइपोथेसिस की तरह कैसे समझाएंगे? फॉर एग्जांपल, you have taken a hypothesis. You have gone to a place and you have seen that something is wrong in the lot 1. But when you rejected, now the seller become very cautious. In the second lot से वो ठीक ठाक बेचने लगा. So will you change your criteria of checking or not? मतलब पहले जब 100 पेज तक चेक किया था, इस बार भी 100 पेज ही चेक करेगा या फिर कुछ अलग करेगा? इसमें भी स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ेगा. कोई anyone want to give it an answer? देखो, अगर दिल से सोचेगा तो सब लोग एक ही आंसर आएगा, यस वी विल गिव देम अ चांस. ये सुन, ये तो सच है, शायद मैं भी दूंगा. ठीक है, क्योंकि ऐसे भी अकेला दिल है वगैरह वगैरह. बट स्टैटिस्टिकली सोचे तो दिस गर्ल इज प्रूव्ड herself, she has proved herself to be a time waster. So giving again a chance, you are putting on a sure shot debacle because that person has proved ये गड़बड़ है. मतलब दुकान में जाके, मार्केट में गया, बहुत सारे दुकानें, एक दुकान में पिछले बार खाया था और तुम्हारा पेट 7 दिन तक खराब था, तो तुम उस रेस्टोरेंट में जाके सोच रहा है शायद मेरा पेट खराब होने के बाद ये मैंने रिव्यू दिया, इन लोगों को इतना झाड़ा था, उसके बाद शायद ये लोग चेंज हुआ है, चलो कोशिश कर दे. व्हाई? बिकॉज देयर आर अदर 99 ऑप्शंस ओपनिंग. तुम कोई भी और दूसरा रेस्टोरेंट में जाएगा, अब वहां भी रिस्क है, बट स्टिल इट इज नॉट प्रूव्ड. ओके, so statistically, even the girl does it, the boy should not be trust her, or even the boy does it, the girl shouldn't be trusting him, because maybe after again 4 or 3 meetings that person will get back to that. ऐसा कितना बार चले? You can only give it a one chance try. Okay, so this is कहते हैं root statistical decision making. So once it is done, it's done. So as you say कि इसके बाद फिर से वापस आएगा तो आएगा, क्योंकि हम लोग चांस नहीं दे सकते, क्योंकि 4 बार के बाद ही ये पूरा, ये आने का बात करने पर भी ये नहीं जाए. Okay, so even in hypothesis testing also, if it is not a monopoly market, monopoly means only one seller, अगर ये मोनोपोली मार्केट नहीं है, बाकी कोई भी मार्केट में इस तरीके की चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर मल्टीपल सेलर्स आर ऑब्वियसली अवेलेबल. सो यू ओनली गेट अ सिंगल चांस, है ना? चलिए आगे बढ़ते. Sir, या, this is also associated with the choice theory of statistics. Yeah, tell me. so that alternative hypothesis means Alternative hypothesis means, for example,
If I say that x less than equal to 1, so the alternative hypothesis will be x greater than 1. Okay, so this is the null hypothesis structure. So if this is the area I'm looking for, then the rest of the area is the alternative. If this is the area is null, then rest of the area is alternative. Clear? So as I'm saying, choice theory. So person becomes too choosy after being betrayed, isn't it? So in the second case, the second time when the boy meets again a girl, or here our girl meets again a boy, so they will become and they will try to choose the partner, and by putting a lot of new restrictions. So the next time, जैसे मान लो आप अगर दुकान में गए हो, वही कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो दूसरे वाले को आप चांस देने के लिए नहीं बैठे. It's not a monopoly market. But as in our case, what happens if the boy sees that there is not ample girls available? Okay. Very less number of girls are available, and he has to do a lot of hard work again in order to get a girl. Was it clear? तो यहाँ पर मैं चॉइस थ्योरी ये कहता है कि अगर आपके पास मैं 4 चॉइसेस देता हूँ, वो ज्यादा आसान है या फिर 40 चॉइसेस से चूज करना ज्यादा आसान? Can anyone tell me? 4 choices or 40 choices? Obviously 4 choices ज्यादा आसान है ना? लेकिन रियल लाइफ में हमें क्या लगता है? We need 40 choices. The girl needs at least 40 choices. The boy needs 40 choices. डेटिंग एप्स में जैसे होता है, राइट? सो फेसबुक में जैसे होता है, आपका हम लोग मेरा फेसबुक में 3000 से ज्यादा दोस्त, मेरे कितने लोग हैं 5000 से भी ज्यादा दोस्त है, 5 ही मैक्सिमम है. ठीक है, फेसबुक को ये बढ़ाना चाहिए थोड़ा बहुत. तो और कुछ लोगों का 200 भी दोस्त है. अगर किसी का मान लो फेसबुक में 10 दोस्त हुआ तो उसका प्रोफाइल लोग क्या कहोगे? फेक प्रोफाइल कहेंगे कि नहीं? अरे 10 दोस्त तो किसी का नहीं है, सब तो फेक है. So society has created a standard of friends of at least 150 to 200 in order to become an authenticated profile. ठीक है? So choice theory is like this. अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, आप थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं और चूज कर दिया. 40 लोगों में से आपको कोई थ्योरी नहीं है. You are going, you are becoming, your randomness become more. हम लोग random statistics में एक और चीज करते हैं. आज थोड़ा थ्योरी के ऊपर ज्यादा काम करेंगे. In statistics we do randomness. Random variable हम लोग नाम सुने हैं. So random variable is choosing a variable randomly. 1, 7, 15 ऐसा 40, 45 सब random numbers है. अब मैं और random number choose करता हूँ. 1 log 1 e to the power 545 cos of 943. अब ये नंबर ऊपर वाले नंबर से काफी ज्यादा रैंडम है. So even the randomness coefficient, या फिर मान लो this is लास्ट में क्या लेंगे? 32 to the power 31, 34, 38, 48, 64, 84 कुछ भी ले सकते हैं. लॉजिक क्लियर हुआ? So randomness of the variable is also differ from this to that. दोनों ही random variable है, but randomness enhanced. So here, when the boy is deciding whether to get another girl or not, if the choice is not that easy and if the availability is not that much, he may again fall into the trap of reselection. And where especially the girl is coming out with a new fresh look, or the boy is coming out with a new fresh look. तब मन करता है ठीक है चांस दे. Okay, so even if the choice theory says no matter what the history of the data says, you will again panic and you will again take it. ये सबसे ज्यादा होता है सेल्स फिगर्स में. मतलब सिर्फ सेल्स में आपके साथ बिना एसोसिएटेड वाली चीज भी आप इसीलिए खरीदते हैं. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप चीजें खरीदते हैं, और जब आप बिलिंग काउंटर में लंबा खड़ा रहते हैं, देखिए वहां पर भी कुछ प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, आप खड़े हो रहे देखते हैं, और वो प्रोडक्ट्स काफी कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे वहां पर क्या रहता है? मैगजीन्स रहते हैं जो आमतौर पे कोई नहीं खरीदता, या फिर मान लो कभी कभार क्या रहता है? परफ्यूम्स भी रहते हैं. यू सी देम. तो दोस्त थिंग्स जिसमें बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं है लेकिन बेचने में बहुत पैसा, और वहां पर नॉर्मल प्रोडक्ट कभी नहीं मैंने देखा. च्युइंग गम रहता है कभी कभार मैंने देखा. तो स्ट्रेटजी है. या
Exactly. So we will take the strategy as well. For example, here we got a question of strategy as well. पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक स्ट्रेटेजी है भाई. जितना जितना वीक स्ट्रेटेजी वो उतना ज्यादा हारने के कगार पे खड़ा है. जैसे मान लो यहाँ पर एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ. कॉपी कीजिए. Random variable size 4 is taken from the normal distribution with unknown mean and variance. Now to test H0 mu equal to 0 against mean positive है या mean negative है, the following test is used. क्या हुआ है देखिए कि हम लोग H0 मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. रिजेक्ट H0 if and only if मतलब IFF less than minus 20. ठीक है. ठीक. और अच्छा सर, x1 plus x2 plus x3 plus less than 20 কেন দিলা? नहीं नहीं এটা দিয়ে দিয়েছে. এটাই ওদের টেস্ট. और এটা क्वेश्चन है. Find the value of sigma. अब सवाल तो अब आ रहा है. Find sigma so that level of significance of the test is 0.14.
Okay, 0.14. So probability of type 1 error क्या होगा? Let it be alpha. So alpha equal to what? Probability of type 1 error, that is 0.14. Significance of level of significance of the test means the probability of type 1 error. तो 0.14 टाइप 1 एरर का मतलब क्या है? सही वैल्यू को रिजेक्ट करना, वही s रिजेक्टेड n. So probability reject h0 when h0 is true. Okay, so reject h0 कब आएगा? वही sum of the value less than -20. Summation of xi less than -20 given mu equal to 0, I equal to 1 to 4. तो चार वैल्यू का सम ये है, तो चार मतलब 20 -20 by 4 -5 इज एवरेज. तो यहाँ पर मीन आ जाएगा, घुस गया ना. x बार लेस देन -5, यही तो बोल रहा है सेम है. म्यू इक्वल टू 0. ये कैसे आ रहा है? एकदम रियलिस्टिक सम. x bar -0 by sigma by 2 -5 -0 by sigma by 2. Okay, so z, this is the first equation, leave it like this. So x bar follows a normal distribution. This x bar this with respect to standard normal table, z का वैल्यू लेस देन 1.04 होने का चांसेस है 0.1. That will be the second part. So obviously ये दोनों सेम है. So 1.08 equal to 10 by sigma. बस हो गया sigma 10 by 10.8. Sorry, 1.08.
9, 2, 6. So the standard normal has to be, so here the standard deviation has to be 9.26 so that the significance level will be close to 0.1. अब कोई बता सकता है सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ने पर ये बढ़ेगा कि घटने पर बढ़ेगा? So it is with respect to enhancement. More and more the value of significance you take, more and more cautiously you can have to deal with the data. So the cautiousness of dealing with the data enhances with respect to the higher value. जैसे मान लो आपके पॉकेट में अगर एक मोबाइल फोन है तो जितना संभाल के रखोगे, एक मान लो पुराना खत्म हो गया मेडिसिन का चीज है जिससे मेडिसिन खरीद के लिया, ठीक है, पुराना शाशे और रास्ते में फेंका नहीं के बाद में फेंक देंगे, सो उसको उतना अच्छे से तो रखोगे। या फिर मान लो ये मान लो ये आपका खो गया टूट गया, इसका एक दूसरा खरीदने लगे लिए के जा रहे हैं, then also it is useful but not that useful. So obviously the way you give your attention will be different. तो चलिए एक और ऐसा करेंगे। These are like exact sums, very important. A normal population of the standard norm deviation is 60. H0 is mu equal to 5. Versus H1 mu equal to K, and next, what would be the value of the K and the sample size N? Which would allow the probability of type 1 error to be 0.0228, and the probability of type 2 error to be 0.1587. Give it a try. Same पुराना स्टाइल ही है।
कोशिश कीजिए और भेजिए मुझको। Let's have a look in the first place. क्या बोला है? X is a normal distribution. Look wise कैसा रहेगा? 16 square. Since alpha equal to 0.0228. Probability of type 1 error. Alpha equal to reject H0. अभी तक क्या? When H0 is true. First linings are all same. Okay. So x bar greater than অঙ্কটা ভালো করে তুলেছো? Everyone need to copy the sum. तभी समझ में आएगा ये. Sir, that line probability reject H not slash then sir? हाँ line. Sir, type 1 error equal to alpha that line. Yeah, reject H0 given H0 is true. Okay. Done. अब मैंने ध्यान से देखो x बार का वैल्यू k-2 दिया था, उससे ज्यादा हुआ तो we have to reject it. मान लो एक रूम में 10 लोग रह सकते हैं, ज्यादा हुआ तभी तो रिजेक्ट होगा, 4 लोग आया थोड़ी ना रिजेक्ट होगा. SD by root n.
রুটের ভিতর কি লিখেছে স্যার? 256 by root. So probability of z greater than k by 7 divided by root over 256 by n. So this value is, ये है वही 0.228 जो दिया था, सेट वैल्यू के हिसाब से कर लेंगे। root over so 16 with respect to table value 0.977 is closest to 0.2. Okay, तो दोनों ही probability of z के हिसाब से दिया हुआ है, so we can remove the z from the system. ये दोनों सेम हो गया, तो k minus 7 and that is equal to 2. So k minus 7 root 32. अभी तक आया नहीं है सबका, अब टाइप 2 एरर का काम आप लोग करेंगे। Give it a try. Probability of type 2 error इसी से कैलकुलेशन करना पड़ेगा और दोनों से दो इक्वेशन आएगा। There is one equation we got k and n and that is giving you 32. This is equation number 1. हिंट यही है कि आप रूल टू इक्वेशन 2 लाओगे उस तरीके से। अब आएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर में क्विकली। तो टाइप 2 एरर क्या था? वही गलत लड़की को चूज किया, एक्सेप्टिंग अ रॉन्ग गर्ल। देखो आप तुम लोगों को भूलेगा नहीं। पहले जो मिस्टेक किया वो क्या था? असली लड़की आई, उसे बोला भागो, और फिर दूसरे बार में जिसको चूज किया वो एक फालतू लड़की निकली। तो यहाँ पर में क्या हुआ? जो पहला मतलब फर्स्ट एरर इज व्हाट? रिजेक्टिंग अ करेक्ट गर्ल। सेकेंड केस मतलब टाइप 2 एरर क्या? एक्सेप्टिंग अ रॉन्ग गर्ल। एकदम आसान। मतलब लोग सही लड़की को छोड़ेगा तभी तो गलत लड़की के पास जाएगा, सही लड़की को पकड़ लेगा तो कोई एरर नहीं, गलत लड़की को रिजेक्ट कर दिया तब भी कोई एरर नहीं। Again, you can think in the boys kind of a way. Okay. Probability of type 12. Now, for second equation, we go for type 12.
So do not reject H0 when H1 is true, or accept H0 when H1 is true. So this is probability of ওটাকে লিখলাম H1 H1 is accept H0 when H1 is true. second line is the probability of Type 2 error. Okay. So 1 minus probability of z less than equal to root 2n by 256. So 16 more. So 0.1587 equal to probability of z less than equal to 2 root n by 16. Probability of 1 minus 0.87, so 841. Again, checking from the table. We have this closest value is z less than equal to 1. So 2 root n by 16 is 1, so n equal to 864. Putting this in the other part, अब उसमें डाल देगा. So k equal to 11, n equal to 64. Done? Anyone have any doubt? Tell me. This one is a mixture of the type 1, type 2, and all the possible hypotheses, and all the things can be given. So that's why it's a relatively long one. चलिए आगे बढ़ते हैं.
স্যার আমাদের কোনো মক টেস্ট হবে? হ্যাঁ, হবে নিশ্চয়ই। আসলে স্যার সামনেই জ্যাম, তো ওই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, চাইলেই তুমি নেক্সট সোমবার থেকে শুরু করতে পারো। জাস্ট আমাকে 96745 নম্বরে দেবে, প্রথম মক টেস্টটা কালকেই পাঠিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, a question. Now I'm introducing the power of the test also. হ্যাঁ, let x be the number of independent trials required to obtain a success where p is the probability of success on each trial. The hypothesis H0 p equal to 0.1 is to be tested is to be tested against the alternative hypothesis H1 p equal to 0.3. Okay. The hypothesis is rejected if x less than equal to 4. So what is the power of the test if H1 is true? Give it a try. This will be the last sum of the day. Sir, Yeah.
Sir, in which series this video will be uploaded? Sorry, In which series these videos will be uploaded as statistics? D6 का लिंक चाहते हो तो अलग से इसका भी लिंक भेज देंगे. Sir, D6 is statistics portion, Yes. but if I like try to open it, it says you don't have access to it. अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ. तुम अपना ईमेल आईडी भेजना हो तो. सर या सर अभी तक मुझे ब्रॉडकास्ट में नहीं ऐड किया गया है ग्रुप में. मैंने कॉल भी किया था तो फिर उन सर ने बोला कि अभी कर लेना है. ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं हो. ब्रॉडकास्ट मतलब पता है तो जो मैं फोन से भेजता हूँ क्लास का. सर मुझे ये जो वीडियोस होते हैं रीसेंट वीडियोस वो नहीं मिलते हैं. सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है तुम्हारा प्रॉब्लम? मुझे लेकिन जो तुमको तुम्हारा मुझे आईडी पासवर्ड खोल के नहीं, तुम्हारे वहां से कुछ तुम्हारा आईडी पासवर्ड खोल के उर्वशी ने देखा है कि उसको वहां पर सारा एक्सेस है. सर वहाँ मुझे जो वीडियोस मिलते हैं वो 2 साल पुराने हैं. जो अभी के हैं वो नहीं मिलते हैं. तुम कौन से लिंक में जाके देखती हो? सर लिंक जो आपने लिंक भेजा हाँ तो लिंक D4 तक है या D6 तक है? D5 तक है. हाँ D6 में होगा वो. देखो तुम लिंक गया भाड़ में, लिंक को देखने का कोई जरूरत नहीं है. तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करना है, तुम डायरेक्टली वहां पर भी जाओ, ठीक है, और ऑनलाइन शॉर्ट क्लासेस खोलो और स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओ जहां पर मैं D6 दिख रहा है, ठीक है, और D6 में डायरेक्ट घुस जाओ. उसमें जो जिसके पास D5 का एक्सेस है उसके पास D6 का भी एक्सेस है. तुम खुद को क्लिक करना पड़ेगा. तुम्हारे पास जो ईमेल में क्या है सिर्फ उसी के ऊपर भरोसे में रह रही हो. इसीलिए हमारे यहाँ से एक्सेस है, मतलब एक्सेस है. तुम्हें D6 D5 अलग अलग से पेज में घुसने पर देखना पड़ेगा, इसीलिए शायद हो नहीं रहा. ठीक है, तो D6 में अभी देखना है. आज ही एक बार लॉगिन करके करना, रात तक मुझे बताओ. सर जो मेरे पास है उसमें ये लिखा है कि 1 मिनट में पढ़ के बताती हूँ कि नहीं, इकोनॉमिक्स. अभी नहीं, अभी सबके से डिस्टर्ब होगा. ये सम कर लेते हैं तो मुझे सिर्फ पर्सनल चैट में भेजो, ठीक है, सबके सामने बोलना. ओके, सो लेट x be the क्या था, number of trials needed, p equal to probability of success on each trial. H0 equal to p equal to 0.1 is to be taken. H1 equal to p equal to 0.3. तो हम लोग इसको कहेंगे यहाँ पर में टेस्टिंग करेंगे 1 minus beta part of the test. So 1 minus probability of reject H0 if H1 is true. हाँ, तो probability पे 1 minus 5 के लिए ये एक्सेल कौन सी? So what are these values? Probability of x less than or equal to 4 with probably this part. Okay, so this is first is P, QP, QQP.
P and 1 minus Q are same. So the power of the test is 0.759. How does answer? Very good. Okay, so that's it for today. Let me send you the classes PDF. স্যার এখানে এক্সটা তো স্যার প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস ছিল হ্যাঁ ঠিকই দাদা। স্যার আপনি দেখুন প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু 2 X less than equal to 4. Reject H0 when H0 is H1 is true. Because in a type 2 error, exactly the opposite happens. I'm sending you this PDF, have a look. Okay.